Welcome to your own channel. We call it as exaMnorM. I welcome you all in the next session, that is for your RBI circulars for the month of January. Now, most of you, as I have taken up many of your mentorship sessions and one-on-one mentorship sessions as well, I have realized and I have myself also given you the advice that if you are not having, I would say, if you don't have time, then you can skip the month of January as well as February with respect to finance current affairs. But I have a logical answer to give. The logical answer says that if RBI will be asking a question from finance related current affairs, and that too from January month, the first priority will be given to RBI circulars. Now the question is, sir, how many RBI circulars we need to cover? Then today I have 13 RBI circulars which we have to cover, and we will be targeting 60 minutes to cover these circulars. So if you are investing 60 minutes to cover in a decent manner, you're covering 13 circulars, you will be in a position to answer all the questions which are going to be asked from the January month. So rather than studying a PDF of, let's say, 70, 40, 80 or maybe 150 pages or 200 pages, it's better to just cover up these 13 circulars. That will be more than enough. With that particular agenda, I have created this class and I will be taking exactly your 60 minutes to complete all these circulars. तो एक बार, दो बार, तीन बार अगर आप ये वीडियो देखते हैं, मतलब अगर आपने दो बार भी ये वीडियो देखी, दो घंटे आपने इन्वेस्ट किए और उसके साथ साथ अगर आपने एक घंटा मेरी जो पीडीएफ है उसे भी रिवाइज किया, तो 3 घंटे के अंदर यू विल बी सुपर डुपर रेडी फॉर योर जनवरी फाइनेंस करंट अफेयर्स. अगर वहां से मान लेते हैं कि 5 क्वेश्चंस आए, एग्जांपल ले रहा हूं, तो उसमें से 3 क्वेश्चन, 60 से ज्यादा % of questions will come from the RBI circulars only. So this session, or I would say if you are watching this session, it's going to give you a good return on your investment. ठीक है जी. So with that particular agenda, I have created this particular session. So let's get started with the discussion. May I have a reply in the comment section that I am audible, visible, everything is fine. I know my throat is not well, but still I expect a reply in the comment section that am I clear, चल जाएगा काम, ज्यादा कोई प्रॉब्लम तो नहीं है. अगर इस तरह से इस सेशन को कवर किया जाएगा तो आई होप यू विल बी इन अ पोजीशन टू अंडरस्टैंड. आई हैव increase the volume of my mic so that you can hear it pretty well. लेकिन अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो please let me know in the comment section, and if it is fine, give me a thumbs up so that we can start the discussion without any further delay. Even I would request everybody, those who have decided to skip January current affairs, I request you again, you may leave, you may, I would say, forget covering the entire RBI, entire finance current affairs for the month of January, but these circulars, they are going to play a very important role in your examination. So let's get started. So in total, I am expecting that you will be investing 3 hours in order to answer 2 to 3 questions for sure in your examination. So it's a good return on your investment. चलो. So बिना किसी देरी के आज के सेशन की शुरुआत करते हैं. We have a first question. The first question is related to RBI has revised the framework on risk weights for NBFC exposure to infrastructure lending. यानी कि जो NBFCs है, if they are providing loan to the infrastructure projects, in that particular case, what will be their risk weights? And those risk weights have been recently revised, and those revisions or those datas are need to be covered at our level so that we can answer the question in the examination. ठीक है जी. तो आओ जरा इसे स्टार्ट करते हैं. सबसे पहली चीज जहां से मैं आज के इस डिस्कशन को स्टार्ट करूंगा कि अगर मैं सर्कुलर की बात करूं, इस अनाउंसमेंट की बात करूं, तो दिस अनाउंसमेंट हैज बीन डन for NBFCs, that is non-banking financial companies, and it is the final guideline on the risk weight requirements. इसमें अगर हम बात करें what was the objective, sir, the objective was basically to encourage greater lending to the infrastructure sector as well as balance financial stability with credit growth. कब से applicable होगा sir? It will be applicable from 1st of April. और अगर मैं ट्रांजेक्शन की बात करूं या फिर ग्रेस पीरियड की बात करूं, so for exposure enjoying the lower risk weights under the existing rules,
but it is now attracting the higher risk weights under the revised framework. So NBFCs, they will continue the existing weights until the earlier of next review of the exposure done, or till 31st March 2027 और 31st March 2027 तक का ग्रेस पीरियड दिया गया है, which is really very important to remember. ठीक है, तो क्वेश्चन आपके सामने, इससे रिलेटेड 4-5 चीजें हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है. सबसे पहली कि सर एक्चुअली में ये है क्या. दूसरा, it has proposed more stringent risk weight framework for the infrastructure loans which are extended by NBFCs to the projects related to infrastructure. Applicable कब से होगा, apply कब से होगा, from 1st of April. ये point important है, 31st March 2027 वाला. What does this point says? It says that NBFC may continue with the existing risk weights until the next review or till 31st March 2027, whichever occurs earlier. ठीक है, अब अगर मैं बात करूं क्या रिवीजन है, तो रिवीजन ये है कि सर रीपेमेंट ऑफ ओरिजिनल सैंक्शन प्रोजेक्ट डेट, अगर आपने 2% पहले रीपे किया था, देन इन दैट केस risk weight was 75%, but now sorry, earlier the condition was if you have paid back or if you have paid 5%, then the risk weight was 75%. लेकिन अब इस 5% को कम करके 2% कर दिया. अगर आपने 10% लोन रीपे किया है, then in that particular case risk weight was 50%, but now this 50% risk weight is applicable on 5% repayment itself. तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर एनबीएफसी ने 5% रीपेमेंट भी कर दी, तो उस केस में बोरोवर ने 5% रीपेमेंट भी कर दी, तो उस केस में एनबीएफसी जो है वो रिस्क वेट्स जो मेंटेन करेगा 50% है, विच वाज अर्लियर मेंटेन्ड एट अ रीपेमेंट ऑफ 10%. अब क्वेश्चन पढ़ते हैं. द रिवाइज फ्रेमवर्क एम्स टू एनकरेज lendings to the infrastructure sector, that is correct. The framework becomes applicable from 1st April, that is correct. NBFC qualify for a 75% risk after the repayment of 5%, that is correct. Earlier this was 10%. NBFC exposure qualify for 50%. Sorry, earlier it was 5%, but now it has been reduced to 2%, so this is wrong. NBFC exposure qualify for 50% अगर 5% का repayment है, that is correct. Existing lower risk weight may continue until the next review or till 31st of March 2027. तो 31 मार्च 2027 तक तो ऐसा होगा ही होगा, इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है. तो उसके हिसाब से जो हमारा आंसर बनेगा that will be what? So the answer is going to be B option, that is correct. Moving on to the next question. अगला क्वेश्चन क्या कहता है सर, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू आरबीआई रिकॉग्नाइजिंग FEDAI एज सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन. मुझसे कोई पूछे व्हाट इज अ सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या दूंगा सर. इट इज बेसिकली अ सपोर्टिंग इंस्टीट्यूट विच इज approved and set up by RBI, and this institution basically assist the regulator to perform its operations in a better manner. So SROs, they are asked by RBI to ask the concerned sector related companies or the organization to become its member, and then for the members the assistance, the regulation and the voice of these regulated entities in front of the RBI or any other regulatory body will be the SRO. ठीक है. So Reserve Bank of India has formally recognized Foreign Exchange Dealer Association of India, Foreign Exchange Dealer Association of India for the all authorized dealers operating in the foreign exchange market as a self-regulatory organization. So this recognition has been done under the RBI's omnibus framework for SRO, and it is based on if I'm not wrong, Section 22 of Banking Regulation Act 1949. So SROs in general, they set standards, they promote best practices, they ensure ethical behavior, as well as they monitor compliance among their members, and in this case the members are going to be authorized dealer. RBI has also given 1-year transition period that has been given to FEDAI to align its governance system and transparency standards with the omnibus framework during the period. During this period, I would say FEDAI
DAI must also broaden its membership to all the categories of authorized dealers, whether it is category 1, 2, 3 or whatever. The key eligibility conditions to become an SRO are: the organization should be not for profit entity first. Second is it must be registered under section 8 of Companies Act 2013. The company's net worth must be minimum 2 crores within 1 year of recognition. No single entity should hold 10% or more paid up capital. No single entity in SRO should hold more than 10% of paid up capital, and it must have an adequate operational and technology system. Its officials should be fit and proper, and all the, or I would say the majority of the sector related institute should be the member of the same. ठीक है, ये बेसिक कंडीशंस है. अब इन कंडीशंस को अगर मैं देखूं तो ये देखो, नॉट फॉर प्रॉफिट, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया. मस्ट हैव एडिक्वेट ऑपरेशनल एंड टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर. ऑफिशियल्स मस्ट फिट एंड प्रॉपर एंड मस्ट हैव ट्रांसपेरेंसी बायलॉज एंड साउंड गवर्नेंस. ठीक. आरबीआई हैज आल्सो गेव इन प्रिंसिपल अप्रूवल टू एसएफबीसी फॉर होली ओन्ड सब्सिडरी इन इंडिया. तो एसएफबीसी को भी एक अनाउंसमेंट की गई थी, वो पॉइंट इंपॉर्टेंट था कहीं ना कहीं जनवरी मंथ से, तो मैंने इंटेंशनली इसे यहां इंक्लूड कर दिया. इट्स नॉट अ मिस्टेक बाय एआई, इट हैज बीन इंक्लूडेड इंटेंशनली, ताकि एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और आपके साथ कवर हो जाए. ठीक है, क्लियर है? लेट्स ट्राई टू रीड द क्वेश्चन. आरबीआई हैज रिकॉग्नाइज्ड FEDAI as an SRO for all authorized dealers operating in the foreign exchange market. That is true. The recognition was granted under RBI's omnibus framework for SRO. That is true. FEDAI, which stands for Foreign Exchange Dealers Association of India, has been given a transition period of 1 year, not 5 years. It has been given a transition period of 1 year. This is wrong. As an SRO, FEDAI will set standards, promote best practices and monitor compliance among the authorized dealers. That is correct, because it has been created for authorized dealers. Next is the minimum net worth within 1 year should be 2 crores. That is also correct. So keeping that in mind, what should be the answer? The answer to that particular question should be B option. That is absolutely correct. ठीक है जी, क्लियर हो गई बात, समझ आ गया पॉइंट. आगे बढ़ू, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं. अगला क्वेश्चन क्या है? It is related to the RBI operational directions on interest subvention under निर्यात प्रोत्साहन. निर्यात means export, प्रोत्साहन means promotion, or I would say pushing the exports or promoting the exports of the country. तो उसके रिस्पेक्ट में RBI ने क्या क्या डिसीजंस लिए हैं? So let's talk about them. So in January 2026, RBI has issued the operational directions for the interest subvention component. Interest subvention का मतलब क्या होता है? See, we all have heard about subsidy. Subsidy का मतलब है when you purchase a product, but certain part of your product price is paid by the government. In a similar manner, when certain part of your interest is paid by the government, it is not known as interest subsidy, rather it is known as interest subvention. ठीक है? So this is the I would say the directions have been issued for the interest subvention component under the Niryat Protsahan, which is the first component of the export promotion mission. Remember that it is the first component of export promotion mission. What are the objectives? So the purpose of this particular component is basically to lower the cost of export credit, especially for the MSMEs, so that we can promote the MSME exports, and this credit will be provided for pre-shipment as well as post-shipment purposes. Now, if I talk about the interest subvention, the interest subvention is going to be 2.75% per annum. It is going to be 2.75% per annum, and maximum benefit will be given 50 lakh rupees per MSME during the financial year 2025-26. Along with this, it applies on all, that is pre-shipment as well as post-shipment rupee export credit, who all are eligible. So the MSME, which is a manufacturer exporter as well as the merchant exporter, यानी कि अगर आप ट्रेडर है या फिर आप मैन्युफैक्चरर है
in both the cases, but you are dealing with a goods commodity, then you are eligible under it. And in that particular case, you must have valid and active import export code. You must be valid MSME under the Udyam registration number, or you must have a valid Udyam registration number. These guidelines are applicable on scheduled commercial banks, urban cooperative banks, state cooperative banks, as well as all India financial institutes. If I talk about the collateral support, in order to solve the collateral related challenges for MSME, this scheme is going to be implemented by CGT MSC. CGT MSC is going to be the implementing agency, and if it is an implementing agency, that means it is going to give the guarantee, and the coverage is going to be, or the guarantee is going to be 85% for micro and small enterprises, and this guarantee or coverage will be 65% for the medium exporter, and maximum outstanding guaranteed exposure, maximum outstanding guaranteed exposure will be 10 crore rupees per exporter in a financial year. 10 crore rupees per exporter in a financial year. लेकिन उस केस में जो आपका लोन है for the given financial year, it should be 50 lakh rupees. So RBI has issued the operational guidelines. So if I talk about these operational guidelines, they include a term that is EPM. So Export Promotion Mission has been, or this is the first initiative under Export Promotion Mission, which was launched by the government with a total outlay of 25,060 crore rupees for next 5 years, for the financial year 2025-26 to financial year 2030 to 31. It will be implemented by, this Export Promotion Mission is going to be implemented by Department of Commerce, Ministry of MSME, Director General of Foreign Trade, as well as Ministry of Finance. So we have two sub schemes. One, we have the Niryat Protsahan, Affordable and Diversified Trade Finance, as well as Niryat Disha, which will provide market access, branding compliance, logistic trade intelligence. So all the skills, all the information to become a better exporter will be provided under this initiative itself. Now let's try to solve a question. RBI issued the operational guidelines in January 2026. That is correct. The interest subvention applies only to the post shipment export credit. That is wrong, because it is for pre as well as post. The interest subvention is 2.75% per annum. True, अगर 10% का interest है तो 2.75% will be coming up from the government and guarantee 85% or 65% against the export up to a value of 10 crores. Up to a value of 10 crores will be coming up from CGT MSC. Along with that, we need to remember the maximum benefit in the current financial year could be 50 lakh rupees. That is correct. RBI has released operational guidelines only for interest subvention component of Niryat Protsahan. No, it has been released for RBI has released the guidelines only for this. No, sir, it has released the guidelines for the other initiative as well, which we call it as what? Sir, we call it as Niryat Disha. We call it as Niryat Disha. ठीक है, तो ये भी गलत हो गया. उस हिसाब से 1, 3, 4 is going to be the correct answer. लेकिन यहाँ तो कोई ऐसा ऑप्शन ही नहीं है. यहाँ तो कोई ऐसा ऑप्शन ही नहीं है. फिफ्थ कैसे करेक्ट होगा? हाउ इज फिफ्थ करेक्ट? गिव मी द आंसर. स्टेटमेंट में ऐसी क्या चीज है जो मैं जानबूझ के नहीं देखना चाह रहा हूं, जो आप लोग देख पा रहे हैं? कैन यू गिव मी द आंसर प्लीज? सर, अगर हम गाइडलाइंस की बात करें तो आरबीआई ने दोनों की गाइडलाइंस नहीं दी है. आरबीआई ने सिर्फ प्रोत्साहन की गाइडलाइंस दी है. आरबीआई लिखा है. ओवरऑल स्कीम्स जो लॉन्च हुई है वो 2 लॉन्च हुई है अंडर द इनिशिएटिव ऑफ ईपीएम, दैट इज एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन. तो आरबीआई के पॉइंट ऑफ व्यू से ये करेक्ट है. सो आंसर इज गोइंग टू बी ए ऑप्शन. अगला क्वेश्चन, ट्राई टू अटेम्प्ट इट, आई विल बी राइट.
Chalo, let me cover this news and then we'll solve this question. So first of all, let's check out what is it. So this is basically the export and import of goods and services related regulation, which has been presented under the Foreign Exchange Management Act. Under the Foreign Exchange Management Act. So in January 2026, RBI notified Foreign Exchange Management Regulations 2026 under the Foreign Exchange Management Act 1999. The regulations, they basically seek to establish uniform reporting timelines. I repeat, this guidelines is basically related to what? So it is basically related to or specific to establish the uniform reporting timelines, mandatory digital reporting, as well as enhanced monitoring and streamlined regulatory process for foreign trade transactions. These regulations, they will come into effect from 1st of October 2026, and it has replaced the existing Foreign Exchange Management Act Export of Goods and Services Regulation 2015. On what all it is going to be applicable? So it will be applicable on export transactions, import transactions, export transaction, import transaction, merchanting, trade transaction, goods, services, software exports, as well as service imports. The next point over here is digital reporting framework, what it has been introduced. So all trade related foreign exchange transaction must be reported digitally now. One is for export, that is export data processing and monitoring system. I repeat, export data processing and monitoring system, and the other one is import data processing and monitoring system. If I talk about the reporting timeline, authorized dealer bank must upload the relevant information within 5 working days, which include the export details from non-EDI ports into EDPMS, service export details, as well as service import details. Everything is need to be done. All references and application to RBI will be routed through Pravaha portal, which stands for Platform for Regulatory Application, Validation and Authorization. This is something which you need to remember. अगला पॉइंट है एक्सपोर्ट डिक्लेरेशन वाला हो गया, ठीक है, रिपोर्टिंग टाइमलाइंस हो गई. This you need to remember, that is 5 working days. Next point is export declaration form. So exporters of goods must submit export declaration form, as well as they come up with the full export value is need to be declared at the time of export. Export proceeds realization timelines has been fixed. In case of normal exports, it's going to be 15 months, and in case of export invoiced and going to be settled in INR, it will be 18 months. Is it clear? It will be monitored by the authorized dealer itself. It will be monitored by the authorized dealer as well. It will be monitored by the authorized dealer banks, and they are empowered to monitor the transactions, ensure closure of outstanding entries, and follow up with exporter, importer, or any other entity which is involved. ठीक है जी. इसके अलावा you have to remember remittance reporting, inward remittance, outward remittance, export transaction, import transaction, merchanting, trade transactions are need to be reported. Monitoring will be done by whom? Sir, it will be done by the authorized dealers. ठीक है जी. 5 is wrong. 5 is wrong. Then what should be the answer? 5 is clearly written on the screen. If you have any issue with this, blissful, please check it once and let me know. Is there any problem? Let me give you the answer. These regulations will come into force on 1st of October 2026. That is correct. Normal export proceeds will be generally realized within 15 months. Correct. Export invoiced and settled in Indian rupees are allowed 18 months of realization. That is correct. All references to RBI under these regulations must be routed through Pravaha portal. That is correct. The regulations designate the Directorate of Enforcement as primary monitoring authority for export and import transactions. Is it correct? Is it correct?
Give me yes or no. Yes, sir. This is also correct. Any suspicious transaction must be reported to the Directorate of Enforcement under the Ministry of Finance. Now, what they are writing the regulation designate that Directorate of Enforcement as primary monitoring authority for exports and import transaction. Whether it is a primary authority, no sir, it's not a primary authority, but if anything goes wrong in that particular case, it will be given that information. But then the question is, which entity is the primary entity? So the primary entity which is going to look after these transactions is authorized dealer banks. So answer is going to be A option. 1, 2, 3, 4 are correct, but the fifth option is incorrect. ठीक है जी, क्लियर हो गया? आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट. अगला पॉइंट देखते हैं क्या है. अगला क्वेश्चन है विद रिस्पेक्ट टू द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंटीग्रेटेड ऑम्बुड्समैन स्कीम 2026. अब इंटीग्रेटेड ऑम्बुड्समैन स्कीम 2026 में काफी सारे चेंजेस हुए हैं और उसके साथ साथ मैंने पूरा का पूरा स्कीम ही आपके लिए कवर कर दिया. इसको पढ़ लोगे तो इंटीग्रेटेड ऑम्बुड्समैन स्कीम पूरी कवर हो जाएगी विद द हेल्प ऑफ दिस वन स्लाइड ओनली. एक एक करके सारी बातें करते हैं. So this scheme is going to be implemented. This scheme is going to be implemented from 1st July 2026, and RBI Integrated Ombudsman Scheme 2021 has been replaced by RBI Integrated Ombudsman Scheme 2026 to improve complaint quality, strengthen the maintainability rules, clarify the compensation provisions, as well as streamline the complaint processing. Objective क्या है? Sir, objective बड़ा simple है. Fast grievance resolution, zero cost to customers, digital first compliant handling, fair treatment of customers, as well as strong accountability of regulated entities. Who all are included in this? So if I talk about the inclusion, all commercial banks, regional rural banks, cooperative banks with deposit more than 50 crores or more, they are included. Deposit taking NBFCs are included. Customer interface NBFC with asset greater than 100 crores are included. Non-bank prepaid payment instruments are included, or non-bank prepaid payment instrument issuers are included, and credit information companies are included. So ombudsman will be RBI officer appointed for a tenure of 3 years, and they will be given the full powers. Deputy Ombudsman will handle the specific closure and settlement matters wherever required. Then they have also talked about centralized receipt and processing center. You might have heard about it. ये वो सेंटर है जहां पे सारी की सारी कंप्लेंट्स लैंड होती हैं when you are writing the complaint through the online or mail, online, email या फिर पोस्ट कर रहे हैं. It will land to Chandigarh, and even you can go to the Ombudsman office to register your complaint. So it is located in Chandigarh. It is a single national complaint intake system, and it has a stronger screening powers as of 2026. What are the maintainability conditions? कब हम कहते हैं कि complaint maintainable है? पहला सर, सबसे पहला condition है, you should register your complaint to the regulated entity. You should wait for their reply. If no reply is given within 30 days, you can go. If reply is given but you are not satisfied, then also you can go. Complaint should be filed within 90 days. And no pending. The complaint should not be pending anywhere else in any other type of court. Then only you will be. Then only your complaint will be accepted, and it will be called as maintainable complaint. If I talk about the resolution timelines, so regulated entities should respond within 15 days. लेकिन 30 days की window है. If no reply received, then only you can go to the ombudsman. Award compensation has been increased. Now, if there is a financial loss, then in that case, financial loss up to 30 lakhs. Financial loss up to 30 lakhs can be compensated, or the maximum amount which can be awarded against the financial loss is 30 lakhs. Mental harassment is compensation is 3 lakh rupees. Award acceptance should be done by the customer within 30 days, otherwise the award will lapse. Okay? What is the appeal mechanism? So if you are not satisfied even after the resolution given by the ombudsman, you can reach to the executive director of Consumer Education and Protection Department of RBI, and you can register your complaint.
There are certain obligations which are need to be fulfilled by regulated entities. Regulated entity should appoint principal nodal officer of GM rank or above. Ombudsman details prominently displayed in on your website as well as in your branches. Disclosure should be done in English, Hindi and regional languages, as well as everything should be available on the bank's website as well. So these are the basic changes which has been done. तो अगर आप देखोगे तो मैंने सारे changes लिख दिए हैं. Why was an ombudsman needed? क्या था पहले, अब क्या हुआ, अब क्या क्या changes है, किस किस पे ये applicable है, उसके अलावा कब से implement होगा, क्यों इसे implement किया जा रहा है, आरबीआई ओम्बुड्समैन का अपॉइंटमेंट कैसे होगा, डिप्टी गवर्नर का क्या रोल है, सीआरपीसी का क्या रोल है, कंप्लेंट कवर्ड all the deficiency in services, delay or failure in services, unfair practices, RBI direction violation, credit report error, payment failure, whatnot. Who can file? Customer can file, applicant for services can file, as well as the authorized representative in case of a company can file. Maintainability conditions मैंने आपको बता दी. Some of the matters are excluded like commercial decisions, employer-employee disputes, inter-entity disputes. SBI और PNB लड़ रहे हैं, आरबीआई कहेगा जाओ यहाँ बताओ, ये तुम्हारे लिए नहीं है. Then court directed actions. If any cases with the court, it won't be entertained by ombudsman, and matters outside RBI jurisdiction अगर कोई चल रहा है, it won't be entertained. So you can go with CMS portal, you can write an email, and even you can file your complaint physically. Initial scrutiny will be done. That means automated checks will be done. CRPC verifications will be done. Non-maintainable complaints will be rejected कि भैया पहले अपनी regulated entity के पास जाओ, हमारे पास सीधा क्यों आए हो. And new concept is not valid complaint will also be given a tag to the complaint अगर आपकी complaint valid नहीं है तो. Investigation powers की बात करें तो ombudsman के पास power है कि आपके documents मांग ले. Interference for non-corporation confidentiality protection will be done, and sharing of documents between the parties will be done. तो पहले regulated entity के पास जाओ, उसके बाद regulated entity should respond within 15 days. अगर करती है तो बहुत बढ़िया, वरना 30 दिन तक वेट करो, और 30 दिन के बाद you can go to the ombudsman. You can go to the ombudsman. अगर ombudsman के पास आया तो ombudsman अवार्ड दे सकता है 30 लाख और 3 लाख, जो कि पहले 20 लाख और 1 लाख था. कस्टमर एक्सेप्टेंस विद इन 30 डेज. आपने कुछ नहीं बोला तो एक्सेप्ट मान लिया जाएगा, और अगर आपने एक्सेप्ट नहीं किया तो 30 दिन के अंदर अंदर भैया चले जाओ. कहां? अभी मैंने आपको बताया था, यू कैन रीच टू द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, कंज्यूमर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट. ये रिजेक्शन ग्राउंड्स है, ये अपील्स हैं जो आप कर सकते हैं, as well as the obligation of the regulated entity has been given. ये important है that regulated entity, that is banks, they should appoint principal nodal officer to have a contact or to be a spokesperson for RBI. ठीक है, for ombudsman. So that is a point. RBI integrated ombudsman scheme came into force on 1st of July 2026. That is correct. कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है. That is correct. Complaint can be filed directly before ombudsman without first approaching to regulated entity, not allowed. Ombudsman may award 30 lakh and 3 lakhs. That is correct. Customer interference NBFC. Customer interface NBFC with asset greater than 100 crores are covered. That is correct. Deposit taking NBFC covered. Even the asset size is less than 100 crores. That will also be correct. CRPC is set up in Chandigarh. That is also correct. So answer is going to be A option. 1, 3, 4, 5 are the correct answers for the given one. भाई इमेज हटा तो दी थी, पहले ही हटा दी थी शायद प्राची. मैं हटा दूंगा अपनी इमेज, कोई बात नहीं. मैं नहीं चाहता कि आप मुझे ज्यादा देखो. डोंट वरी. मैं हटा दूंगा जैसे मुझे लगेगा कि मेरे पीछे कंटेंट है. आई विल रिमूव इट. डोंट वरी. इज इट फाइन? आगे बढ़ू? चलो अगले पॉइंट पे बढ़ते हैं. अगला क्वेश्चन क्या कहता है? द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग आरबीआई कमर्शियल बैंक्स concentration risk management amendment directions 2025.
तो जो अमेंडमेंट डायरेक्शंस 2025 में आई थी, बट दे वर implemented from 1st of January 2026. We will be talking about them. So RBI has earlier issued the Commercial Bank Concentration Risk Management 2025 to regulate the concentration risk arising from exposure, and this exposure is related to single entity or single counterparty, connected counterparty or group entity, specific sector as well as intra group entities. ऑब्जेक्टिव बड़ा सिंपल है सर कि एक ही सेक्टर, एक ही इंडिविजुअल को इतना ज्यादा एक्सपोजर ना फेस करो ताकि अगर वो पार्टी ऑब्लिगेट ना करे आपके कॉन्ट्रैक्ट को, देन इन दैट पर्टिकुलर केस बैंक विल बी इन प्रॉब्लम. सो मेजर अमेंडमेंट्स आर एलिजिबल कैपिटल बेस for LEF. What is LEF? Large exposure framework. So tier 1 capital infused after publication of balance sheet will be considered for this reference. Current year earned profits will also be added in the tier 1 capital, and eligible capital base is defined as the effective amount of tier 1 capital for maintaining these large exposure फ्रेमवर्क्स. ठीक, मॉडिफिकेशन भी की गई कुछ. वो मॉडिफिकेशंस थी कि जो मैंने वर्ड यूज किया ग्रुप फॉर इंट्रा ग्रुप ट्रांजैक्शन एंड एक्सपोजर, उसे इंक्लूड किया गया कि भैया अगर मल्टीपल बैंक्स है और मल्टीपल बोरोवर्स हैं, देन दे विल बी कंसीडर्ड अंडर अ सिंगल ग्रुप इफ दे आर बोरोइंग फॉर अ कलेक्टिव नीड. इसमें कुछ एक्सक्लूजन्स भी हैं. सो देयर आर एक्सक्लूजन्स ऑफ सर्टेन ब्रांच एक्सपोजर्स. सो इट इज excluded from the intra-group transaction and exposures. What is excluded? That is the intra-group transaction and exposure limits. It is excluded from these limits. Tab exposure of an Indian bank to its overseas branches, exposure of foreign banks, Indian branches to the head office and overseas branches, that will be given an exemption, that will be given an exclusion. That is what you need to remember. ठीक है. इसमें अगर मैं बात करूं, इस पर्टिकुलर अनाउंसमेंट में बहुत क्लियरली कहा गया था दैट बैंक शुड स्ट्रेंथन इट्स बोर्ड्स रिस्पॉन्सिबिलिटी. बैंक बोर्ड मस्ट फॉर्मुलेट पॉलिसीज कवरिंग सिंगल काउंटर पार्टी एक्सपोजर, इंटरकनेक्टेड काउंटर पार्टी ग्रुप्स, सेक्टोरल कॉन्सेंट्रेशन रिस्क, एंड बोर्ड मस्ट ऑल्सो आइडेंटिफाई एंड मॉनिटर अल्ट्रा लार्ज बोरोवर्स. what are ultra large borrowers? Who are highly leveraged or have substantial borrowing from the banking system. कि या तो उनका leverage ज्यादा हो, भी borrowing already ज्यादा हो, या फिर उन्होंने substantial borrowing की हो from the banking system. तो इसमें अब revisions क्या किए गए हैं, please pay attention. Revise exposure limits for foreign banks. So Indian branches of the foreign banks, in that particular case, their exposure will be 20% of the eligible base. Their exposure will be 20% of the eligible base. अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं तो ये बहुत क्लियरली आपके लिए लिखा, that is exposure foreign branches of the, I would say the branches of the foreign banks in India. ऐसा इसको याद रख लो तो भी आपका काम चल जाएगा. So in that particular case, you need to remember that what is the limit. So the limit is 20% of the eligible capital base for non-GSIB banks. अब यहाँ पे मुझे ये आंसर देना पड़ेगा that सर ये जो आपने टर्म लिखी है GSIB, इसका क्या मतलब? एनी आइडिया गाइस? हैव यू हर्ड दिस टर्म अर्लियर? पढ़ाई थी मैंने आपको जनवरी में, शायद आपको याद हो. अगर नहीं याद तो मैं बताता हूँ. ये जो टर्म है GSIB, दैट इज ग्लोबल सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक. तो अगर आपका ग्लोबल सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक है तो 20%, नहीं है तो उस केस में 25%. एक्सपोजर टू हेड ऑफिस एंड द अदर ग्लोबल सिस्टमैटिक इंपॉर्टेंट बैंक्स या ग्लोबल सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स. एंड इफ आई टॉक अबाउट द exposures, if I talk about the exposure to the head office, in that particular case, अगर head office के exposure की बात करें, that is 20%. exposure to non GSIB will be 25%. ठीक है जी, क्लियर होगी ये बात है. अगर यहाँ पे कोई डाउट है तो पूछ लो, वरना I will be moving ahead. तो यहाँ पे आपको इसको ऐसा देखना,
exposure to head office and other global systematically important banks, exposure to non-global systematically important banks. So this is 20% of eligible capital base, 25% of eligible capital base. लेकिन यहाँ पे जो डिफरेंस है वो डिफरेंस कैसा है? So that is Indian branches of foreign non-GSIBs. तो जो आपकी इंडियन ब्रांचेस है फॉर फॉरेन नॉन GSIBs उनके लिए 25% एंड 20% है, दैट इज सेम. ठीक है जी, क्लियर हो गई बात, समझ आ गया पॉइंट? इफ इट इज क्लियर गिव मी यस सर, गिव मी अ थम्स अप, आई विल बी मूविंग अहेड. अब इसमें आपको क्या क्या चीजें याद रखनी है? सो ग्रॉस बेसिस एक्सपोजर कैलकुलेशन. जो एक्सपोजर है दैट विल बी बिटवीन इंडियन ब्रांच ऑफ फॉरेन बैंक, हेड ऑफिस और हेड ऑफिस ब्रांच. क्रेडिट मिटिगेशन, credit risk mitigation disclosure is need to be done. There is a change in the intra-group transaction and exposure. So exposure value includes the fund credit exposure, non-fund credit exposure, investment exposure, as well as underwriting commitment. Everything will be included. Okay? Is it fine? So GSIB exposure limit to HO is 20%. GSIB exposure limit to non-GSIB is 25%. Non-GSIB exposure to HO is 25% and non-GSIB exposure to GSIB is 20%. क्लियर होगी ये बात? ये वाला पार्ट मैं दोबारा बताता हूँ क्योंकि एग्जामिनर क्वेश्चन यहीं से बनाएगा. प्लीज पे अटेंशन. मैं ये कहना चाह रहा हूँ, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, अगर एक ग्लोबल सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक है, ठीक है, इसकी एक्सपोजर लिमिट टू whom? So to the head office or any other global systematically important bank will be 20%. और अगर एक ग्लोबल सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक है, इसकी एक्सपोजर लिमिट यानी ये कितना लोन दे सकता है, दैट विल बी 25% टू whom? Sir, to the non GSIB. ठीक है. दूसरी तरफ अगर एक नॉन GSIB है तो उसके लिए एक्सपोजर लिमिट कितनी है सर? वो है 25%. 25% इन केस ऑफ HO और नॉन GSIB. और अगर ये एक नॉन GSIB लोन दे रहा है, और ये किसे लोन दे रहा है सर? ये लोन दे रहा है ग्लोबल सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक को, तो ये लिमिट कितनी होगी? दैट विल बी 20%. बस इतना याद रखना है कि भैया जो कैपेबल ज्यादा है उसके लिए एक्सपोजर 20, इसके लिए 25. जिसकी कैपेसिटी कम है क्योंकि वो ग्लोबली इंपॉर्टेंट नहीं है तो उसको हमने थोड़ा ज्यादा एक्सपोजर अलाउ कर दिया, 25 एंड 20%. अब Tier 1 capital infused after the published balance sheet date must be considered while computing the eligible capital base. That is correct. Current year profit acquired by the bank will be included in Tier 1 capital. That is correct. Exposure of a foreign bank's Indian branch to its head office. Exposure of a foreign bank's Indian branch to its head office is completely excluded from the concentration risk limit. Is it completely excluded? Say yes or no. Is it completely excluded? Say yes or no. Give me the answer. अरे बोलो भाई, अभी तो बताया आपको. No sir, they are not excluded. Counterparty limits will continue. और वो लिमिट किस पे डिपेंड करेंगी? सर डिपेंड करेंगी कि आप ग्लोबल सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक है, नॉन ग्लोबल सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक है. तो दिस इज रॉन्ग. नेक्स्ट इज एग्जिस्टिंग इंट्रा ग्रुप एक्सपोजर ब्रीचिंग रिवाइज लिमिट्स मस्ट बी ब्रॉट विद इन लिमिट ऑफ 6 months. तो ये जो आपकी अगर आपने फुलफिल नहीं की है किसी क्राइटेरिया को एज पर द करंट अनाउंसमेंट, देन यू हैव टू implement it within 6 months. That is absolutely correct. So time to rectify the breaches is given 6 months. That is correct. The framework enhancing credit supply for large borrowers through market mechanism has been replaced on 1st of January 2026. That is also correct. तो आंसर क्या बनेगा सर? ए ऑप्शन. ये आपको याद रखना. ठीक है जी. तो यहाँ पे आपको
ये पॉइंट बहुत अच्छे से याद रखना है, 6 months वाला, 25% वाला और 20% वाला, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, दे कैन बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन। चलो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट regulations 2025, foreign exchange management regulations 2025, that is export and import of currency. This is not export and import of goods and services, this is export and import of currency. तो export and import of currency के context में क्या क्या points हैं जो आपको यहाँ पे याद रखने हैं। तो सबसे पहला point जो आपको याद रखना है, export of Indian currency to Nepal or Bhutan, that means an eligible person, a person other than the citizen of Pakistan or Bangladesh may take or send Indian currency notes to Nepal or Bhutan. General restriction is currency notes above 100 denomination are generally not permitted. There are certain exemptions. An individual traveling from India to Nepal or Bhutan may carry Indian notes of denomination above 100 and they are subject to limit of 25,000. Now if you are importing इंडियन करेंसी फ्रॉम नेपाल और भूटान, इंपोर्टिंग का मतलब कि अगर आप नेपाल या भूटान से इंडिया में आ रहे हो, सो पर्सन अदर देन सिटीजन ऑफ पाकिस्तान और बांग्लादेश मे ब्रिंग इंडियन करेंसी नोट्स इनटू इंडिया फ्रॉम नेपाल, बट जनरल रिस्ट्रिक्शन है, नॉट यू विल नॉट बी कैरिंग द नोट्स अबव 100 रुपीज डिनोमिनेशन इन जनरल। एग्जाम्पशन क्या है कि अगर कोई इंडिविजुअल ट्रैवल कर रहा है टू इंडिया फ्रॉम नेपाल और भूटान, ट्रैवलिंग कर रहा है फ्रॉम नेपाल और भूटान, घूमने आया, तो उस केस में इंडियन करेंसी नोट्स अबव 100 डिनोमिनेशन अलाउड है और सब्जेक्ट टू लिमिट यहां पे भी कितनी है, 25,000। ठीक, सो इसमें हमें क्या याद रखना है, अगर एक पर्सन मूवमेंट ऑफ नेपालीज एंड बांग्लादेशी करेंसी की अगर मैं बात करूं, अ पर्सन में टेक नेपालीज करेंसी फ्रॉम इंडिया टू नेपाल एंड ब्रिंग नेपालीज करेंसी फ्रॉम नेपाल टू इंडिया, अलाउड है। भूटान की बात करें, you can take Bhutanese currency from India to Bhutan and even you can bring back Bhutanese currency from Bhutan to India, they are allowed। ठीक है, तो बेसिक सी बातें, 25,100 रुपए और ट्रैवल वाला पार्ट आपको याद रखना है, इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट है नहीं। क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, द अमेंडमेंट मॉडिफाइज द फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट regulations of 2015, that is correct। Regulation 8 has been completely substituted and now deals with the movement of currency between India and Nepal, this is absolutely correct, बिल्कुल सर, उसी के लिए बनाया गया। Indian currency notes of denomination above 100 may be freely taken to Nepal, not allowed। A person traveling from Nepal or Bhutan to India may carry Indian currency notes above 100 denomination up to 25,000, that is correct। Citizen of Pakistan and Bangladesh are not eligible for the currency movement, that is correct। तो उसके हिसाब से आंसर क्या बनेगा सर, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, अच्छा यार कमेंट सेक्शन में एक क्वेश्चन आया हुआ है, कमेंट सेक्शन में एक क्वेश्चन आया दैट सर हाउ वी डिफाइन अ बैंक एज ग्लोबल सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक, ग्लोबल सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक। तो अगर मैं इस क्वेश्चन का आंसर दूं, this decision is done on the basis of scoring and the scoring is the scoring is basically done by BIS, you must have heard about BIS, so Bank for International Settlement। इसको थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं, इसको थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं। अगर मुझसे कोई पूछे कि ग्लोबल सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक क्या है, तो मैं क्या कहूंगा सर, दीज आर those banks which are considered too important or too big to fail, because if they fail it will impact the global economy, if they fail it will impact the global economy, है ना। अब क्वेश्चन ये है कि सर इंडिया में तो हम 2% जीडीपी के हिसाब से इन्हें आइडेंटिफाई कर लेते हैं, लेकिन इन्हें ग्लोबली कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है, देन माय आंसर इज the Financial Stability Board as well as the Basel Committee on Banking Supervision, they assess the banks annually based on 5 equally weighted criteria। वो criteria क्या है, सबसे पहला what is the size of the bank, second size means the total asset to determine the scale of potential market fallout, है ना। second is interconnectedness of the bank, second is interconnectedness of the bank, then third is
substitutability of the bank, कि how easy it is to substitute this particular bank. उसके साथ साथ the fourth criteria we have is complexity. Complexity means account for the opacity, derivative exposure, operational difficulty, and last we have the cross jurisdictional agency. That means measure the scope of banks' international operations. So that is cross jurisdictional activity. तो भैया सबको 20-20% का वेटेज दिया जाता है और उसके बेसिस पे एक स्कोरिंग की जाती है और स्कोरिंग के बिहाफ पर आपके बैंक्स को आइडेंटिफाई किया जाता है. आज की डेट में अगर मुझसे कोई पूछे सर कैन यू गिव मी द लिस्ट ऑफ द बैंक्स, तो मुझे कोई बैंक याद आता है या नहीं? अगर मैं लिस्ट की बात करूं तो इसमें मेरे हिसाब से भी 2026 के लिए तो अनाउंसमेंट्स हुई नहीं है जितना मुझे आइडिया है, बट ऑब्वियसली मैं भी चेक करूंगा, एक बार आप भी चेक कीजिएगा. लेकिन अगर हम लिस्ट की बात करें, जो बैंक्स मुझे याद आ रहे हैं, आई थिंक जेपी मॉर्गन शुड बी देयर, है ना, होना चाहिए या नहीं? एक्चुअली मैंने लिस्ट कभी इस नजर से देखी नहीं कि कौन कौन से बैंक्स इसमें होने चाहिए, बट हाँ क्वेश्चन आ सकता है. और अगर क्वेश्चन आया, लिस्ट में तो नहीं आएगा, कोई नाम भी आपसे नहीं पूछा जाएगा, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे पता होना चाहिए था. तो मैं जेपी मॉर्गन मुझे याद आ रहा है, बैंक ऑफ अमेरिका मुझे याद आ रहा है, HSBC मुझे याद आ रहा है, सिटी ग्रुप मुझे याद आ रहा है, इसके अलावा एग्रीकल्चर बैंक ऑफ चाइना, बार्कलेज, ये कुछ मुझे बैंक्स याद आ रहे हैं. बाकी एक बार आप चेक कीजिएगा. आई रिपीट, जेपी मॉर्गन, बैंक ऑफ अमेरिका, सिटी ग्रुप, HSBC, इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक ऑफ चाइना, एग्रीकल्चर बैंक ऑफ चाइना, सिर्फ बैंक ऑफ चाइना, बार्कलेज, ये कुछ बैंक्स हैं विच आई कैन रिकॉल. इंडियन बैंक कोई है, आई थिंक इंडियन बैंक, नॉट आई थिंक, आई एम प्रीटी श्योर, इंडियन बैंक कोई भी इस लिस्ट में इंक्लूडेड नहीं है. ठीक है जी, क्लियर है? अच्छा हाँ, अगर आप उससे ही पूछो कितने इंस्टीट्यूशंस हैं, तो सर 29 है. और इनकी जो बकेट्स हैं वो कितनी है? इफ आई टॉक अबाउट दी बकेट्स, तो 5 बकेट्स हैं. 5 बकेट में 29 बैंक्स हैं विच हैव बीन इंक्लूडेड. बट मुझे जितने नाम याद थे मैंने बता दिया. मुझे 29 बैंक्स तो याद नहीं हो सकते, लेकिन हाँ 2-4 बैंक के नाम और याद होने चाहिए थे, आई बिलीव. हाँ, एक गोल्डमैन सैश भी होना चाहिए, एक UBS होना चाहिए, इसके अलावा डिशूचे बैंक होना चाहिए, आप जो भी प्रोनाउंसिएशन उसकी करते हैं. स्टैंडर्ड चार्टर बैंक भी होना चाहिए. ये बैंक्स होने चाहिए मेरे हिसाब से. जेपी मॉर्गन एज वेल एज मॉर्गन स्टैनले दोनों है. जेपी मॉर्गन भी है, जेपी मॉर्गन चेस एंड मॉर्गन स्टैनले बैंक दोनों है विच आर इंक्लूडेड इन दिस पर्टिकुलर लिस्ट. ठीक है जी, क्लियर है? चलो टाइम वेस्ट नहीं करते, आगे बढ़ते. अगला क्वेश्चन है हमारा रिलेटेड टू BSBD अकाउंट्स. अब अगर मैं BSBD अकाउंट्स की बात करूं, तो BSBD अकाउंट से रिलेटेड कुछ रीसेंट चेंजेस किए गए हैं, कुछ अमेंडमेंट्स की गई हैं. लेट्स टॉक अबाउट दोज अमेंडमेंट्स. सो वी ऑल नो दैट बेसिक saving bank deposit account are the zero balance deposit account which were introduced with the motive of financial inclusion. So RBI has reviewed the framework of these BSBDA banks, which covers all the commercial banks, small finance bank, payment bank, local area bank, regional rural bank, urban cooperative bank, rural cooperative bank, all are included. It is implemented from 1st of April 2026. अब इसमें पहली चीज BSBDA account recognized as a normal banking service. That means every bank must offer BSBD account as their regular banking product. There will be no minimum balance requirement. Then there are free minimum facilities available. So bank must provide free of charge deposit facility. Bank must provide free of charge deposit facility. The bank must provide free of charge receipt of money through electronic channels. Bank must provide deposit or collection of checks free of charge. Second, deposit limits. There will be no limit on the number of deposits. Next is
For ATM cards, ATM card or ATM cum debit card, there will be no issuance fees and there will be no renewal fees, which we generally pay. In case of checkbook, minimum 25 check leaves per year will be issued free of cost. Then internet and mobile banking services should be provided again free of charge. Statements like passbook, monthly account statement will be provided free of charge. And in case of ATM withdrawals, 4 free withdrawals per ATM are allowed. 4 free interbank ATM withdrawals are allowed. अगर मान लो मेरा बैंक SBI है और वो मुझे इंट्रा बैंक ATM ट्रांजेक्शन भी फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं दे रहा, तो उसमें भी लिमिट जो है दैट विल बी 4 ओनली. ठीक है. Digital transactions which are not counted as withdrawals, which means I would say 4 withdrawal limits है, that is UPI, IMPS, NEFT, RTGS, इसमें कोई withdrawal limits भी include अब नहीं की जाएंगी. These are some of the important announcements which has been done. Conversion timeline क्या होगा? एक BSBDA को current BSBDA में convert करने का 7 days है. और digital transaction will be counted as withdrawal? No sir, digital transaction will not be counted as withdrawal. How many banks are covered? Then I will say all the category of banks are covered in this particular announcement. Question solve करते हैं. Question क्या कहता है? Every bank should provide BSBD account as a normal service. Correct minimum balance requirement may be imposed? No sir. Digital payment transactions such as UPI, NEFT, RTGS, IMPS are not counted as withdrawal. मतलब ये withdrawal में count नहीं होगी, तो आपकी जो withdrawal limit है उसमें ये withdrawal part में count नहीं होगी. Customer can convert an existing saving account into BSBD account and bank must complete the conversion within 7 days. क्या ये allowed है? Yes sir, this is allowed. Customer cannot hold more than one BSBD account across the banking system. क्या ये सही है? बिल्कुल सही है. ये कब से हुआ है? जनधन अकाउंट के बाद. पहले वन बैंक वन पर्सन था, तो लोगों ने वन बैंक नहीं, ऐसा नहीं, तो पहले कोई लिमिट ही नहीं थी कि आप एक जो जीरो बैलेंस अकाउंट, जिसको हम नो फ्रिल अकाउंट्स कहते थे, उसमें आप अकाउंट ओपन कर सकते थे. लोगों ने क्या किया, एक बैंक में मल्टीपल अकाउंट्स और मल्टीपल बैंक्स में मल्टीपल अकाउंट खोल लिए. फ्री का एटीएम कार्ड मिल रहा था, मजा आ रहा था. फिर आया बीएसबीडी अकाउंट या बीएसबीडी अकाउंट. उस समय कहा गया वन पर्सन वन बैंक अकाउंट या वन बैंक वन पर्सन अकाउंट. फिर लोगों ने क्या किया, हर एक बैंक में अकाउंट खुलवाना शुरू कर दिया. फिर आया जनधन अकाउंट, उसमें कह दिया गया वन पर्सन वन अकाउंट, आधार से लिंक कर दिया. तो बीएसबीडीए इंक्लूड जनधन अकाउंट, तो वो कंडीशन अब बीएसबीडीए पे भी एप्लीकेबल है. ठीक है जी, क्लियर है, समझ आ गया पॉइंट. आई होप सारी इंफॉर्मेशन मैंने आपको दे दी. दैट इज करेक्ट. नहीं यार, मिनिमम बैलेंस और मिनिमम चार्जेस अलग है बेटा जी. ग्रव, अगर आप कोई सर्विसेज ले रहे हैं तो उन सर्विसेज में चार्जेस आर डिफरेंट. मेंटेनेंस ऑफ मिनिमम बैलेंस इज अलग, मतलब दैट इज अ डिफरेंट थिंग. सो मिनिमम बैलेंस इज जीरो ओनली, बट इफ यू आर enjoying some extra services, in that particular case you may have to pay the service charges. That is different. I hope now it's clear. ग्रव, शायद आप मिसमैच कर गए दोनों बातों को, तो आंसर क्या बनेगा? ए ऑप्शन इज करेक्ट. अगला क्वेश्चन है आरबीआई अमेंडमेंट डायरेक्शन ऑन क्रेडिट इंफॉर्मेशन रिपोर्टिंग. आरबीआई अमेंडमेंट डायरेक्शन ऑन क्रेडिट इंफॉर्मेशन रिपोर्टिंग, उसमें क्या क्या पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है? सर, आरबीआई ने इशू किया है इन डायरेक्शंस को फॉर द क्रेडिट इंफॉर्मेशन फॉर द क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस सबमिटेड बोरो डेटा टू द क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज, and that should be done at fortnightly or shorter intervals, but now it has been reduced to 7 days. तो इस पर्टिकुलर अनाउंसमेंट की अगर मैं बात करूं तो पहले 15 दिन के लिए आया था कि 15 दिन तो मैक्स है, 15 दिन तो मैक्स है, लेकिन अब उससे भी कम समय के लिए या उससे भी कम टाइम के लिए यू हैव टू सबमिट. अगर मैं बात करूं, अब इसे वीकली कर दिया गया. सो नाउ अ मेजर रिफॉर्म इज टू मूव फोर्टनाइटली रिपोर्टिंग टू वीकली रिपोर्टिंग. और ये जो वीकली रिपोर्टिंग है उसके लिए डेट्स भी फाइनल कर दी गई है. 9th of every month, 16th of every month, 23rd of every month and the last day of every month, चाहे वो 30 है चाहे फिर वो 31 है. That is you need to remember.
ठीक है जी. You have to submit the details. Incremental file submission will be done within 4 calendar days from the each reporting date. You have to complete your reporting that has been announced. CIC must report on non-compliant CIC must report non-compliant credit institution on the दक्ष पोर्टल. तो ये दक्ष पोर्टल बनाया गया जहां पे क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी यानी कि लेट्स से सिबिल कंप्लेन कर सकती है लेट्स से एसबीआई की, जिसने अपनी रिपोर्टिंग की टाइमलाइंस को फुलफिल नहीं किया. और ये जो रिपोर्टिंग है दैट विल बी डन ऑन हाफ ईयरली बेसिस. 31 मार्च 30 सितंबर 31 मार्च 30 सितंबर यू हैव टू डू द रिपोर्टिंग और बताओ आरबीआई को कि भैया कौन समय से आपको डेटा नहीं दे रहा. एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है सीआईसी की? तो सीआईसी will come up with the uniform validation standards कि यूनिफॉर्म डेटा एक्सेप्टेंस रूल होंगे, यूनिफॉर्म रिजेक्शन क्राइटेरिया होगा सबके लिए फॉर ऑल द सीआईसीज. डेटा क्वालिटी इंडेक्स should be there. That means they will file level data quality index must be provided within 3 calendar days of the receiving data. आपको वो डेटा कैसा लगा, कैसा है, उसकी भी रिपोर्टिंग करनी होगी एंड इट मस्ट बी प्रोवाइडेड मंथली और मंथली बाय द 10th डे ऑफ द नेक्स्ट मंथ. तो उसके बारे में जो आपका आई वुड से क्रेडिट इंफॉर्मेशन लेवल जो आपका डेटा क्वालिटी इंडेक्स है दैट शुड बी रिपोर्टेड ऑन मंथली बेसिस. तो आपको बता दूं दो यहाँ पे अनाउंसमेंट्स हैं जो आपको याद रखनी है. पहली अनाउंसमेंट तो है फाइल डेटा क्वालिटी. जो आपकी फाइल डेटा क्वालिटी है कि भैया ये जो मेरे पास आज फाइल आई है उसके बारे में रिपोर्ट करोगे आप 3 दिन में विद इन 3 डेज. लेकिन अगर आप ओवरऑल क्रेडिट इंफॉर्मेशन डेटा लेवल या क्रेडिट इंफॉर्मेशन लेवल डेटा क्वालिटी की बात कर रहे हैं तो उस केस में दैट रिपोर्टिंग विल बी डन ऑन मंथली बेसिस. पूरे मंथ की रिपोर्टिंग होगी और अगले मंथ के 10th डेट तक या 10th डे तक यू हैव टू कंप्लीट द रिपोर्टिंग. ये पॉइंट भी आपको क्या रखना है, याद रखना है. ये क्राइटेरियाज ऐसे हैं विच यू हैव टू रिमेंबर ताकि क्वेश्चन आए यू विल बी इन अ पोजीशन टू आंसर देम. ठीक है जी, क्लियर हो गया पॉइंट, समझ आ गया. आगे बढ़ू. अगला पॉइंट है एनी रिजेक्शन रिपोर्ट मस्ट बी शेयर्ड विद द कंसर्न्ड क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी. मतलब कि एनी रिजेक्शन ऑफ द डेटा मस्ट बी शेयर्ड विद द क्रेडिट इंस्टीट्यूशन यानी कि बैंक या एनबीएफसी विद इन 3 कैलेंडर डेज. ये भी एक टाइमलाइन फिक्स कर दी गई है. ठीक है, तो रिपोर्टिंग फ्रीक्वेंसी 4 टाइम्स पर मंथ हो गई. डेट्स फाइनल कर दिए. फुल फाइल सबमिशन कब होगी? बाय 5th ऑफ नेक्स्ट मंथ, जो कि आपका क्रेडिट इंस्टीट्यूट करेगा कि पहले तो आपने वीकली किया और फिर उसके बाद पूरे मंथ की फाइल आप 5 तारीख को दे दो. उसके बाद अगर मैं बात करूं इंक्रीमेंटल फाइल सबमिशन विल बी डन विद इन 4 डेज. फाइल लेवल डेटा क्वालिटी इंडेक्स विल बी रिपोर्टेड विद इन 3 डेज. रिजेक्शन विल बी रिपोर्टेड विद इन 3 डेज. क्रेडिट इंस्टीट्यूट लेवल DQI विल बी सबमिटेड ऑन मंथली बेसिस बाय 10th ऑफ नेक्स्ट डे. कंप्लायंस रिपोर्टिंग कि भैया किस किस बैंक ने कंप्लायंस फुलफिल नहीं किया वो सीआईसी करेगा हाफ ईयरली बेसिस पे ऑन 31st मार्च एज वेल एज 30th सितंबर. ये कुछ पॉइंट्स हैं जो मुझे याद आ रहे हैं, इसके बेसिस पे अब क्वेश्चन देखते हैं. क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज डेट्स आर करेक्ट. फुल क्रेडिट इंफॉर्मेशन फाइल मस्ट बी सबमिटेड on 5th day of the following month by the credit institution. That is correct. Incremental files must be submitted within 4 calendar days from the relevant reporting date. That is correct. Credit information company must provide file level data quality index within 3 days and credit institution level कि पूरे इंस्टीट्यूट का जो लेवल ऑफ डेटा है वो आपको रिपोर्ट करना ऑन मंथली बेसिस बाय 10th ऑफ नेक्स्ट मंथ. CIC are required to report non-compliance credit institution on Daksh portal on quarterly basis. No sir, portal तो सही है लेकिन क्वार्टरली बेसिस नहीं. इट विल बी डन 6 मंथली बेसिस. तो उसके बेसिस पे जो आंसर बनना चाहिए सर वो बनना चाहिए 1, 2 and 3. वो बनना चाहिए 1, 2 and 3, लेकिन ऐसा कोई आंसर है ही नहीं सर. अच्छा, फोर्थ भी तो सही है, कोई गलती नहीं है. 1, 2, 3, 4 ए ऑप्शन इज करेक्ट. ठीक है जी, क्लियर हो गया. अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं सर? दिस इज आरबीआई नॉन ऑपरेटिव फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी डायरेक्शंस 2025. अगर मैं इस क्वेश्चन को पढ़ूं आपके लिए तो ये क्वेश्चन बेसिकली क्या था सर? ये क्वेश्चन बेसिकली
एक अनाउंसमेंट है बाय आरबीआई फॉर नॉन ऑपरेटिव फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी, मतलब वो कंपनीज जो खुद फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व नहीं है बट दे आर होल्डिंग द सब्सिडरीज विच आर इन्वॉल्व इन द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस. फॉर एग्जांपल, I would say it's a non-deposit taking NBFC. It is a parent holding company which holds shares of a bank company or any other financial service company. उसे हम कहते हैं क्या, NOFHC. ठीक है. अब इसमें पॉइंट ये आता है कि the activities which are permitted under the Banking Regulation Act. So RBI has clarified that all activities which are permitted under the Banking Regulation Act 1949 must be carried out by the bank itself, not by the NOHFC. For example, guarantee देना, deal in bill of exchange, dealing in promissory note, foreign exchange business, remittance business, safe custody services, trustee services, investment services, ये सारा काम बैंक करेगा. It cannot be done by NOFHC. ठीक है. इसमें अगर मैं अमेंडमेंट की बात करूं तो अमेंडमेंट क्या कहती है? अमेंडमेंट परमिट्स सर्टेन स्पेशलाइज्ड financial activity which can be converted by, which can be, I would say, which can be conducted by NOFHC. They can involve in mutual funds, they can involve in insurance, they can involve in pension fund management, they can involve in investment advisory services, they can involve in portfolio management services, as well as they can involve in brokering services. They can hold a subsidiary, they can go for a joint venture, as well as they can set up an associate company. All the approvals are given. RBI approval की अगर मैं बात करूं तो no prior approval, RBI approval is required for the category, for the operations which have been discussed, जैसे कि म्यूचुअल फंड का काम करना, इंश्योरेंस, पेंशन फंड मैनेजमेंट, या फिर इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विसेज, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज या ब्रोकिंग सर्विसेज. इसके लिए आरबीआई से अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है. ठीक है जी, क्लियर हो गया. नो प्रायर अप्रूवल. लेकिन अगर मैं बात करूं कि आरबीआई को अप्रूवल तो नहीं लेना, लेकिन आरबीआई को इन्फॉर्म करना, और इन्फॉर्म करने की टाइमलाइन है, और वो इन्फॉर्म करने की टाइमलाइन कितनी है? सो दैट इज 15 डेज. आरबीआई को इन्फॉर्म करने की टाइमलाइन कितनी है? 15 डेज. एनी अदर बिजनेस एक्टिविटी विच इज अप्रूव्ड बाय द बोर्ड ऑफ NOFHC then also be reported within 15 days of board approval. कि भैया अगर आप कुछ भी काम करना चाहते हैं तो within 15 days of approval by the board you have to submit to RBI. और अगर आप कोई काम स्टार्ट कर रहे हैं उस केस में once you start within 15 days you have to, once you have the resolution of the board, you have to inform within 15 days to RBI. ठीक है. तो जो एक्टिविटीज आरबीआई ने बैंक के लिए रखी है वो एक्टिविटीज विल नॉट बी डन बाय NOFHC. ये सारी एक्टिविटीज कैन नॉट बी डन बाय NOFHC. क्लियर है? आसानी है. चलो क्वेश्चन देखते हैं. अ नॉन ऑपरेटिव financial holding company is a non-deposit taking NBFC that holds shares of banking company and other financial services. Correct. Activities are permitted under Section 6 of the Banking Regulation Act, must be carried out through the bank itself, not by the NOFHC. That is correct. Mutual fund, insurance, pension fund management may be undertaken without RBI approval, but information is need to be given within 15 days of board approval, and you can perform these functions through subsidiaries, through joint ventures, or maybe through the associates that is allowed. So answer to this particular question क्या होगा? So third statement भी हमारी क्या हो जाएगी? यहाँ पर करेक्ट हो जाएगी. अगले पॉइंट पे बढ़ते हैं. अगला पॉइंट क्या कहता है? प्रायर आरबीआई अप्रूवल इज मैंडेटरी बिफोर कमेंसिंग पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज थ्रू NOFHC हेल्ड सब्सिडरी. ना सर, अगर आप NOFHC की सब्सिडरी है तो आप पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज भी कर सकते हैं विदाउट आरबीआई प्रायर अप्रूवल. आरबीआई मस्ट इन्फॉर्म विद इन 15 डेज. दैट इज करेक्ट. सो आरबीआई को इन्फॉर्म करना जरूरी है. ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. ठीक है जी, क्लियर हो गया. लास्ट न्यूज है आज शाम की, और अगर आपने इतना कर लिया दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट. इस न्यूज की अगर हम बात करें दैट इज बेसिकली रिलेटेड टू आरबीआई KYC अमेंडमेंट डायरेक्शंस. तो आरबीआई ने 2025 में डायरेक्शंस इशू की, यूनिफॉर्म रिस्क बेस्ड KYC फ्रेमवर्क बनाया,
and prevent in order to prevent money laundering and prevent terrorist financing. अमेंडमेंट में क्लैरिफाई किया गया केवाईसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है ऑफ CKYCR. अब मुझसे कोई पूछे व्हाट इज दिस CKYCR, देन व्हाट विल बी माय आंसर? सर इट स्टैंड्स फॉर सेंट्रल KYC रजिस्ट्री or bank uploading KYC data. The bank that uploads customer KYC information to CKYCR is responsible for identity verification as well as address verification. Bank downloading the KYC data, then in that particular case they are directly relying on CKYCR record. Okay, then in that case there is no need to verify it, but at the time of uploading the data you need to verify it. It is applicable on commercial banks, rural cooperative banks, small finance bank, payment banks, regional rural banks, local area banks, NBFCs, ARCs, as well as all India financial institutes. Okay. Customer due diligence is need to be done. So if you are opening up a new account, bank cannot open an account unless customer due diligence is done. If the customer is already KYC compliant with same bank, then fresh KYC is not required. In case of a joint account holding, customer due diligence apply to all the account holders, but for self-help group, joint accounts, individual self-help group members are exempted from separate customer due diligence. उस केस में जरूरत नहीं है. Customer due diligence is required when non-account holder is looking for an international transfer of any amount or domestic transaction of more than 50,000 or product sales worth 50,000 or more, or structured transactions which are deliberately split below 50,000 लेकिन उनकी ओवरऑल वैल्यू 50,000 से ज्यादा, तो भैया उस केस में आपको पहले KYC कराना पड़ेगा, तब जाकर आपकी वो ट्रांजैक्शन होगी. अगर आपने नहीं कराया तो वो ट्रांजैक्शंस नहीं होंगी. लो रिस्क 10 years, मीडियम रिस्क 8 years, हाई रिस्क 2 years. I hope you remember that. In that particular case, risk classification must be reviewed every 6 months. मतलब आपका जो अकाउंट है वो किस कैटेगरी में फॉल कर रहा है उसे आप रिव्यू करेंगे every 6 months as a bank. Bank must upload the KYC records to CKYCR within 10 days of opening the account, and there will be a periodic KYC updation. Bank must send before due date, that is 3 advance intimations, at least 1 physical letter. In case of KYC अपडेट होने वाला तो भैया पहले आप 3 एडवांस इंटीमेशन दोगे जिसमें से एक फिजिकल लेटर भी होगा. इफ कस्टमर डज नॉट अपडेट तो जो रिमाइंडर्स है वो कितने होंगे? 3, और उसमें से एटलीस्ट एक क्या होगा? दैट विल बी फिजिकल लेटर. अगर फिर भी नहीं आता तो भैया फिर उस अकाउंट के ऑपरेशंस को बैंक होल्ड कर सकता. बैंक मस्ट प्रिजर्व द ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड्स फॉर 5 years फ्रॉम द ट्रांजेक्शन डेट. आइडेंटिफाई फॉर 5 years, और उसमें आइडेंटिटी एंड एड्रेस रिकॉर्ड्स भी मेंटेन करना होगा फॉर 5 years इवन आफ्टर द क्लोजर ऑफ द अकाउंट. ठीक है जी. तो जो आज ट्रांजैक्शन हो इसे 5 साल तक होल्ड करो, और जिसका अकाउंट आपने बंद कर दिया उस अकाउंट होल्डर की आइडेंटिटी और एड्रेस 5 साल तक प्रिजर्व करो. बैंक दे मस्ट एंश्योर दैट NGO होल्डिंग अकाउंट आर रजिस्टर्ड ऑन दर्पण पोर्टल ऑफ नीति आयोग. अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है तो उनके अकाउंट्स को आप अलाउ नहीं कर सकते. तो दीज आर सम ऑफ द अनाउंसमेंट व्हिच यू नीड टू रिमेंबर. तो यहाँ पे कोई पॉइंट, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये भी हो गया. तो इसका मतलब मैंने सारे पॉइंट्स बता ही दिए. ठीक है, ठीक है. मुझे इसका मतलब चीजें अच्छी खासी याद है, ऐसी बात नहीं है. ठीक है, क्योंकि मैं इस फ्लो में नहीं बता रहा था. अगर आपने नोटिस किया हो, जो जो मुझे याद आ रहा था मैं वही बोल रहा था कैमरा में देखते हुए. तो ठीक है, मुझे याद रह जाती है चीजें, बस मैं यही चेक करना चाह रहा था आज की क्लास में. अ बैंक दैट अपलोड्स customer record to CKYCR is responsible for verification customer's identity and address. Uploading के समय yes, downloading के समय no need to verify that identity. That is correct. Customer risk categorization must be reviewed after 6 months. Correct. Bank must upload KYC information within 10 days. That is correct. Periodic KYC updation for medium risk account will be done within 8 years or after 8 years. तो उसके हिसाब से आंसर क्या बनेगा? 1 2 3 4. ए ऑप्शन इज करेक्ट. एक क्वेश्चन और कर लो. एक्चुअली देखो अभी कितने बचे हैं. 3 क्वेश्चंस बचे. एक मैं करा देता हूं, 2 आप होमवर्क में कर लेना.
अब इससे ज्यादा बोल नहीं पा रहा हूं मैं, ठीक है। आई होप दैट विल बी डन। चलो इस क्वेश्चन की बात करते हैं। एक सेकेंड। चलिए इस क्वेश्चन की बात करते हैं, दैट इज आरबीआई क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट डायरेक्शंस 2026। इसकी अगर मैं बात करूं तो इसमें क्या क्या पॉइंट्स हैं जो हमें याद रखने चाहिए। तो क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट अमेंडमेंट डायरेक्शन 2026 में आई। अमेंडमेंट क्यों की गई? टू इंप्रूव द क्रेडिट डिसिप्लिन, प्रिवेंट कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, strengthen board oversight, enhance transparency in related party lending. It is applicable on all commercial banks, local area banks, small finance bank, regional rural banks, urban cooperative bank, rural cooperative bank, all India financial institutes as well as NBFCs. Effective from 1st of April 2026. इसमें सबसे पहला पॉइंट है, that is related person, a person directly connected with the regulated entity थ्रू अ मैनेजरल पोजीशन, उसे हम रिलेटेड पर्सन कहते हैं। पर्सन विद मोर देन 5% ऑफ पेड अप कैपिटल, उसे भी रिलेटेड पर्सन कहते हैं। वोटिंग राइट्स मोर देन 5%, रिलेटेड पर्सन। पावर टू नॉमिनेट अ डायरेक्टर विल बी अ रिलेटेड पर्सन एंड कंट्रोल ओवर द इंस्टीट्यूशन विल बी अ रिलेटेड पर्सन। उसके साथ साथ कमेटी ऑन लेंडिंग टू रिलेटेड पार्टी, इसमें a board level committee is responsible to check, to oversight the lending which is going to be done to the related parties. So any existing board committee must be can be designated, or audit committee cannot be designated to for this purpose. तो आपको या तो नई कमेटी बनानी पड़ेगी या ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कमेटी को आप बना सकते हैं, कमेटी ऑन लेंडिंग टू रिलेटेड पार्टीज एक्सेप्ट ऑडिट कमेटी। Then we have reciprocally related person. Reciprocally related person कौन है? A person connected through another regulated entity, for example commercial bank, local area bank, RRBs and all India financial institutes. So in that case I would say the director of another bank or all India financial institute, trustee of mutual fund, relative of such person will be treated as reciprocally related person. For urban cooperative banks and rural cooperative banks, director of any other cooperative bank, board of management member, relative, firm or company where they have interest, they all are termed as reciprocally, मतलब indirectly they will be treated as related person. What are related parties? तो सर रिलेटेड पार्टी में कौन कौन आता है? सर रिलेटेड पार्टी में सारे के सारे रिलेटेड पर्सन आ गए, सारे के सारे रिलेटेड रेसिप्रोकली रिलेटेड पर्सन आ गए, और उसके अलावा वो एंटिटीज आ गई, उसके अलावा वो एंटिटीज आ गई जिन एंटिटीज की ओनरशिप 10% से ज्यादा। इंडिविजुअल के केस में ये 5% था, चाहे वोटिंग राइट की बात हो या पेड अप कैपिटल की। लेकिन एंटिटी यानी कोई कंपनी, कोई फर्म, उसे हम रिलेटेड पार्टी कब बोलेंगे? जब ओनरशिप 10% से ज्यादा है और वोटिंग राइट 20% से ज्यादा, वोटिंग राइट 20% से ज्यादा, तब हम उस एंटिटी को भी इंक्लूड करेंगे एज अ रिलेटेड पार्टी। ठीक है। उसके बाद आ गया मटेरियलिटी थ्रेशोल्ड। तो मटेरियलिटी थ्रेशोल्ड is the level beyond which exposure becomes significant enough to require higher approvals. So it is not applicable to fully cash secured loans or interbank loans. लेकिन अगर कोई ऐसा लोन है जिसमें एक्सपोजर ज्यादा और वो जो मेटिलिटी थ्रेशोल्ड है, दैट विल बी सेट बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, और वो कैसे सेट होगा? सर वो सेट कैसे हो रहा है? वो सेट हो रहा है विद द रिस्पेक्ट ऑफ योर असेट साइज। अगर आप एक कमर्शियल बैंक है, प्लीज पे अटेंशन, अगर आप एक कमर्शियल बैंक है और अगर आपका असेट साइज कमर्शियल बैंक, अगर आपका असेट साइज 10 लाख करोड़ से ज्यादा है, तो उस केस में थ्रेशोल्ड कितनी है? 25 करोड़, यानी 25 करोड़ के लोन तक कोई बड़ा अप्रूवल नहीं चाहिए। और अगर आपका असेट साइज
1 लाख करोड़ से कम है तो उस केस में ये कितना है? सो दैट इज 5 करोड़. इट इज गोइंग टू बी 5 करोड़. ठीक है. आरआरबीज के केस में इफ इट इज ग्रेटर देन 10,000 करोड़ असेट साइज तो ये है 75 लाख रुपए. प्लीज पे अटेंशन, 75 lakhs. इन केस ऑफ ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स तो 10 लाख करोड़. मैं इसको ऐसा कर देता हूं, प्लस ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स. ठीक है, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स. उसके बाद अगर मैं बात करूं स्मॉल फाइनेंस बैंक की तो स्मॉल फाइनेंस बैंक के केस में हमारे पास 3 कंडीशंस है. वो 3 कंडीशंस की 2 कंडीशंस है. 3,000 से 10,000 करोड़ की, 3,000 से 10,000 करोड़ की, उसके लिए 50 लाख का है थ्रेशोल्ड. मतलब इससे ऊपर आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा. और अगर 10,000 करोड़ से ज्यादा है असेट साइज तो उस केस में आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा. सॉरी, क्या कह रहा हूं मैं? हाँ, 1 सेकेंड, आई एम नॉट एबल टू राइट. अगर आपका असेट साइज अप टू 3,000 करोड़ है तो उस केस में ये लेवल है 25 लाख. लेवल है 25 लाख. उसके बाद अगर मैं बात करूं लोकल एरिया बैंक्स की तो लोकल एरिया बैंक्स के लिए लिमिट कितनी है? सो दैट इज फॉर ग्रेटर देन 50,000 करोड़ दिस लिमिट इज 50 lakhs. फॉर असेट साइज 10,000 से 50,000 करोड़ इट विल बी 25 lakhs. और अगर आपका असेट साइज अप टू 10,000 करोड़ है तो उस केस में 10 लाख. ठीक है. इसके अलावा एनबीएफसी बची. तो एनबीएफसी के केस में असेट साइज अगर आपका इसमें असेट साइज नहीं, इसमें लेयरिंग है. इफ यू आर अपर लेयर एनबीएफसी तो ये 10 करोड़ का थ्रेशोल्ड है. फॉर मिडल लेयर इट इज 5 करोड़. फॉर बेस लेयर इट इज 1 करोड़. ठीक है. उसके अलावा अगर मैं बात करूं अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स की, अगर मैं बात करूं अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स की तो उस केस में टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3, टीयर 4. टीयर 4 के लिए थ्रेशोल्ड है 1 करोड़. टीयर 3 के लिए 75 लाख, 75 lakhs. फॉर टीयर 2 इट इज 25 lakhs एंड फॉर टीयर 1 इट इज 10 lakhs. ठीक है. एक बार अब चेक कर लेते हैं मैंने कुछ गलत इंफॉर्मेशन तो नहीं दी. यहाँ कहीं ना कहीं लिखा होगा. इसमें लिखा ही हुआ. नाइन्टी 99.9% ये इंफॉर्मेशन बिल्कुल सही है जो मैंने आपको दी है. तो आप एक बार चेक कर लीजिएगा. तो मेटेरियलिटी थ्रेशोल्ड का मतलब है देयर इज अ स्पेशल रूल फॉर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स एंड रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स. लेकिन अगर मैं बात करूं बोर्ड अप्रूवल के जरिए ही लोन दिया जाएगा. लेकिन अगर आपका एक्सपोजर एक्सीड करता है इस थ्रेशोल्ड से then approval is required either from board or from the committee on lending to related parties. Committee on lending to related parties. और अर्बन कोऑपरेटिव बैंक और रूरल कोऑपरेटिव बैंक में बोर्ड अप्रूवल चल जाएगा, उसमें कमेटी से जरूरी नहीं है. ठीक है. जिसने ये न्यूज पढ़ी है एक बार कंफर्म करो क्या डेटा सही है. मेरे हिसाब से डेटा सही है. मेरे हिसाब से तो डेटा सही है. इसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी हैं और वो रिस्ट्रिक्शंस क्या है? तो वो रिस्ट्रिक्शंस ये है कि lending restrictions to the financial lending restrictions on the financial entities that is cannot lend to their own director, cannot lend to firm where directors are partners, cannot lend to the companies where directors have substantial interest, cannot lend to the promoters and relatives, cannot lend to the shareholding greater than 10% और मोर इक्विटी. तो उनके लिए लेंडिंग अलाउड ही नहीं है. ठीक है. दैट इज अ पॉइंट. बस मुझे लगता है इसके अलावा इंटरनल ऑडिट होना चाहिए. सो इंटरनल ऑडिट मस्ट वेरीफाई द कंप्लायंस एवरी 3 months.
तो इंटरनल ऑडिट इज रिक्वायर्ड फॉर 3 months, दैट इज इंपॉर्टेंट। याद रहेगा जी, क्लियर है? याद रहेगा, क्लियर है? ओके, चलो क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। लेंडिंग टू द रिलेटेड पार्टीज इंक्लूड funded credit, guarantees, investment in the debt investment in debt instruments, but excludes equity investment. Is it correct? Lending का जो मतलब है, उस मतलब में क्या क्या they are trying to ask कि क्या क्या they are trying to ask कि क्या क्या allowed transactions है। तो अगर मैं क्या क्या allowed transactions की बात करूं तो सबसे पहली की बात करते हैं। lending to related parties include funded credit, guarantees, investment in debt instruments, but it exclude the equity instruments or equity investment. That is correct. A person holding more than 5% equity or voting right in a regulated entity qualifies as a related person. That is correct. Maturity threshold are applicable even to fully cash secured loans. नहीं सर, उनके लिए कोई applicability नहीं है. It is applicable only if the collateral or the security is not 100% cash. Internal auditors, they must review the compliance with related party lending rules at least once every 3 months. बिल्कुल सही है. You have to check them. Existing related party loans that are not compliant with the amended direction may continue till maturity but cannot be renewed or enhanced thereafter. This is also correct. तो भैया जो चल रहा है उसको तो चलने दो, लेकिन उसे रिन्यू नहीं किया जा सकता। तो उसमें 5% रिलेटेड पर्सन इक्विटी या वोटिंग थ्रेशोल्ड है, इससे ज्यादा होगा तभी रिलेटेड वर्ड आएगा। 10% रिलेटेड पार्टी इक्विटी थ्रेशोल्ड है, 20% रिलेटेड पार्टी वोटिंग थ्रेशोल्ड है, 3 months इंटरनल ऑडिट फ्रीक्वेंसी है, 25 करोड़ इज द हाईएस्ट materiality threshold है फॉर कमर्शियल बैंक्स एज वेल एज ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स। तो ये पॉइंट्स है जो आपको याद रखने हैं। सो कीपिंग दैट इन माइंड, ए ऑप्शन इज करेक्ट। एक बचा है, दैट इज रिलेटेड टू इंटरनल ऑम्बुड्समैन। एक क्वेश्चन है, दिस इज योर होमवर्क। आप मुझे इसे पढ़कर कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर दीजिएगा और मुझे बताइएगा कि क्या ये 1 घंटा आपको मदद करेगा इन योर एग्जामिनेशन। यू शुड शेयर योर फीलिंग्स विद मी, यू कैन शेयर योर थॉट्स विद मी रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर पॉइंट। ठीक है, तो मैं आपके कमेंट्स आजकल बहुत ज्यादा पढ़ रहा हूं, तो मुझे अच्छा लगता है आप अपने थॉट्स जरूर शेयर कीजिएगा कि क्या ये 1 घंटे में आपको ये फीलिंग आ रही है कि चलो एटलीस्ट बेसिक तो हो गया जनवरी का, अगर कुछ आएगा तो उसमें 60-80% तो कर ही लूंगा। इफ दैट इज अ केस, डू रिप्लाई इन द कमेंट सेक्शन। विल कैच यू लेटर। बाय बाय, टेक केयर, गुड लक, गॉड ब्लेस यू ऑल।